Assalamu alaikum students. I hope you are doing good. So today I am going to discuss replication of DNA, right? So you can see here that this is one original molecule of DNA in which the base pairs and sugar phosphate backbone are labeled, right? So this is the first step. Now we are going to discuss the second steps. So what happens during DNA replication, that the enzyme DNA helicase breaks the hydrogen bond which is present between the nitrogenous bases, right? Or you can say between the nucleotides. So this enzyme will unzip the two strands of DNA. As you know that DNA is double stranded and the two strands are anti-parallel, right? So here in this step the focus is on that the enzyme DNA helicase breaks the hydrogen bond which is present between the nitrogenous bases, like between adenine and thymine, guanine and cytosine, thymine and adenine. When these hydrogen bonds break, the DNA molecule becomes unzipped, right? So this is the second step. Now look at the third step, right? Free nucleotides are also present in the nucleus where DNA replication takes place. So when the DNA unzips, the exposed bases of the two strands, right, do base pairing with those nucleotides which are bonded with them, right? So the exposed bases attract the complementary bases of free DNA nucleotides. Example, C will only attract G, that is cytosine will attract guanine. You can see that here the DNA is unzipped. So here this adenine will bond with any free thymine, cytosine with guanine, and here cytosine with guanine. You can see here, right? Like if this adenine is coming, it will be attracted by thymine and it will get bonded here, and this adenine will get bonded with the thymine. So this is the third step. Now you can see in the fourth step, when that complementary bases join with hydrogen bonds and free nucleotides link up to form a new strand. When these free nitrogenous bases get bonded with the appropriate nitrogenous bases here, and other strand is formed, right? You can see here that these ones are the old strands and here new strands are forming. So this is the fourth step. In the fifth step, you can see that two exact copies of DNA molecules have been formed after getting bonded with complementary nitrogenous bases. You can see that this is the old strand, this is the old strand. When these nitrogenous bases attracted free nucleotides, they bonded with them and here new strands are formed. So two exact copies of the original DNA molecule have been made. This type of replication, in which when two new copies are formed, they will have one old strand and one new strand. This is called semi-conservative replication, right? So here whatever I discussed, it is briefly explained here, that the two strands of DNA are separated by the enzyme helicase, right? This breaks the hydrogen bonds between the bases, causing the strands to separate from one another. This is the first point. Replication is semi-conservative. Each strand now acts as a template for the formation of a new strand. Free DNA nucleotides join up to the exposed bases by specific base pairing. Adenine pairs with thymine and cytosine with guanine due to the number of hydrogen bonds each can form, right? For the new 5 to 3' strands, the enzyme DNA polymerase then catalyzes the joining. This is also discussed here. But the main focus that I want you to keep is
on these diagrams and how all this takes place, right? I will switch to Urdu and I will explain it once again. Like इधर देखें, आप इधर देख सकते हैं कि एक ये मॉलिक्यूल है डीएनए का. डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड, राइट, एंड द बेस पेयरिंग इज़ लाइक एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ. तो एक एंजाइम है जिसको हम लोग डीएनए हेलिकेस कहते हैं. इसका काम ये है कि ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं नाइट्रोजीनस बेसिस के दरमियान, इनको ये क्या करता है, अनजिप करता है, राइट. सो इस पॉइंट में आपने ये याद रखना है कि ऑब्वियसली जब रेप्लिकेशन होना है तो ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं इनको एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा, राइट, ताकि इधर जो है सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बने. तो क्या होगा, डीएनए हेलिकेस इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन नाइट्रोजीनस बेसिस के दरमियान में, इसको क्या करता है, तोड़ देता है. तो ये स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं. अभी ये भी एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करेगा, ये भी. अभी क्या होगा, न्यूक्लियस में जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा वहाँ पे फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे. लाइक अगर यहाँ पे देखें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गई है एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में, तो यहाँ पे कोई फ्री न्यूक्लियोटाइड में थाइमिन होगा तो वो एडेनिन की तरफ अट्रैक्ट होगा, एडेनिन होगा वो थाइमिन की तरफ. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है साइटोसिन के साथ कौन सा है, ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, यहाँ पे भी सेम. तो इसके बाद क्या होगा, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियस में होंगे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट. ये फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे या बेस पेयरिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो न्यू जो स्ट्रैंड्स हैं उनका बनना शुरू हो चुका है. और फाइनल में आप देख सकते हैं कि ये दरमियान से बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और यहाँ पे दो बिल्कुल आइडेंटिकल जो डीएनए है इनकी कॉपीज़ बनेंगे. हम रेप्लिकेशन को कंजर्वेटिव इस वजह से कहते हैं कि जब रेप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनमें क्या है, एक जो है नया स्ट्रैंड, सॉरी ये नया स्ट्रैंड और ये पुराना, ये पुराना और ये नया. बस आपने इस चीज़ पे फोकस रखना है. ये मैंने थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दिया, लेकिन इसको हम लोगों ने इस पे नहीं जाना, यानी लैगिंग, लीडिंग स्ट्रैंड, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, बस आपने ये चीज़ें अपने एम्फेसिस में रखनी है, राइट. सो इसको आप देख लें.